Hello everyone. I hope now the sound is clear. Now the sound is clear. Okay. तो चलिए आज हम लोग करेंगे जो आपका 2025 का बोर्ड का पेपर था उसका सॉल्यूशन. ओके, वी आर डूइंग द लास्ट 10 years सॉल्यूशन फॉर द सीबीएसई बोर्ड क्लास 10. ओके, सो आज हम लोग करेंगे पेपर 2025 जो आउटसाइड दिल्ली का पेपर था उसको हम सॉल्यूशन करेंगे. तो प्रीवियस क्लास दैट इज फिजिक्स क्लास में आप लोग जो फिजिकल साइंस दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट अपने मैडम ने कवर किए थे और बायोलॉजी वाला पार्ट मैं कवर करूंगा. ओके, तो चलिए आज का पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइव सेशन दैट इज अ टॉल pea plant with round seed that is capital T, capital R is crossed with a short pea plant with wrinkled seed. That is genotype is small t, smaller. The F1 generation will be option 1 25% tall with round seed, 70% tall with wrinkled seeds, 100% tall with round seeds, और ऑप्शन डी है 100% टॉल विथ राउंड सीड्स. ओके, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं. चलिए, ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गया. तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम लोग करेंगे 50%. यहां पे 50% टॉल विथ राउंड सीड्स. ओके, सो इसके लिए ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है. ठीक है, ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है. क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए दो अलग अलग कैरेक्टर का एलील प्रेजेंट है. So there have two types of allele, that is one for the seed shape and another one for the plant's height. Okay, so one is capital T, capital R. Okay, one plant that is tall and round. और ये वाला जो कैरेक्टर है ये डोमिनेंट है. Why dominant? Because the alleles or the genes are written in capital letter. We know that the capital letters denoted the dominant alleles, and the another one that is small t, smaller, this is the recessive one. So यहाँ से जो भी गैमेट प्रोड्यूस होता है that is capital T, capital R, यहाँ से भी small t, smaller. एक तरह का गैमेट हम लोगों को मिलेगा. वो क्या है? कैपिटल T, कैपिटल R. और जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो होगा नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी 4. ओके, number of gametes will be 4, but the types of the gamete will be 1. That is, number of gametes will be 4, but the types of gamete will be 1. यहाँ पे भी सेम तरह. So now we will do the cross between whom? These capital T, capital R cross with small t, smaller. So F1 generation में ये है आपका गैमेट एंड ये है आपका पेरेंटल जनरेशन P1. So यहां पे जो होगा
यहां मिल के आपको मिलेगा क्या, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, सो ये वाला जो है ये है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, why heterozygous? Because there have different types of allele, or the traits of the allele are different, because the capital T for the tall but small t for the short. So यहाँ पे जो trait है वो different है, ठीक है। कैरेक्टर सेम हो सकता है, क्योंकि जो टी है वो हम लोग प्लांट का जो हाइट है इसके लिए टी डिनोट करता है कि प्लांट का हाइट क्या है, ठीक है। और कैपिटल टी डिनोटेड द टॉल हाइटेड प्लांट एंड स्मॉल टी डिनोटेड द शॉर्ट हाइटेड प्लांट। सो F1 जनरेशन में जो भी होगा वो सारे टॉल एंड राउंड होगा। Why? Because we know in heterozygotic condition, the dominant allele always shows its characters or trait. Okay, so the capital T, which is responsible for tallness of the plant, so it will shows its characters. So the offsprings of the F1 generation will be tall, and here is also capital R, this is responsible for round seed. Okay, so the option C is the correct answer, that is 100% tall with round seed. Okay, 100% tall with round seed. I hope this is clear to you. If there have any doubt, you may ask in our comment section. Okay, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट, a pair of endocrine glands located in human brain, what are they? Parathyroid and pituitary, pineal and thymus, hypothalamus and thymus, hypothalamus and pineal. Which pair of endocrine glands are located in brain? Okay, ह्यूमन ब्रेन में कौन सा वाला पेयर, कौन सा वाला एंडोक्राइन ग्लैंड का पेयर लोकेटेड है, ठीक है। व्हाट आर दे? ऑप्शन 1 पैराथायरॉयड एंड पिट्यूटरी। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। पैराथायरॉयड किस में रहते हैं? थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? थायराइड ग्लैंड का लोकेशन होता है थ्रोट, ओके, और नेक रीजन। पिट्यूटरी है ब्रेन में। सो दिस वाला ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, pineal gland, this is located in brain, but the thymus is located on thorax. Okay, so this option also incorrect. Next, the hypothalamus and thymus. Hypothalamus located in brain, but thymus located in thorax. So option C is also wrong. Next, the hypothalamus and pineal. This is the correct answer. Hypothalamus and pineal endocrine glands are located in human brain. Okay. चलिए next. Next, okay, select the option having correct matching of organism given in column 1 with the mode of reproduction in column 2. Okay, column 1 and column 2 में जो भी options दिया हुआ है उसको आपको मैच करना है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज लिस्मेनिया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लिस्मेनिया कौन सा, लिस्मेनिया में कौन सा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? कौन सा वाला?
ओके, ऑप्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है regeneration, option 2 multiple fission, option 3 binary fission, option 4 fragmentation, and option 5 is budding. Okay, ओके, लिस्मेनिया का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिशन, सो दिस इज 3. नेक्स्ट, स्पाइरोगाइरा, एज वी नो, दिस इज द फ्रैगमेंटेशन. 4, planaria, of course, regeneration. 1, and plasmodium, we know that is multiple fission. मल्टीपल फिशन 2. चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं. ऑप्शन में ऑप्शन 1 में ऑप्शन ए में दिया हुआ है P4. नो, दिस इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन ए क्रॉस. ऑप्शन बी में दिया हुआ है P3. ओके, नेक्स्ट Q4. ओके, R5. नो, so option B is not correct. Option C, P3, Q4, okay, R1 and S2. Very good. This is the correct answer. Option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. चलिए next. Okay, the basic filtration unit of excretory system in human beings is option 1 nephron, option B urethra, option C neuron, and option D is the urinary bladder. Which one is the correct? The basic filtration unit, okay, in excretory system. excretory system का basic filtration unit क्या है? नेफ्रॉन, यूरेथ्रा, न्यूरॉन या आपका यूरिनरी ब्लैडर, कौन सा है? हेलो रजत, कौन सा है इसमें? चलिए एक एक करके देख लेते हैं. नेफ्रॉन किसका पार्ट है? किडनी. ओके, यूरेथ्रा also the part of excretory system which helps to pass the urine. Okay, opening, this is the opening to pass the urine. Next, neuron, this is the part of our nervous system. Okay, this is the nerve cell. So this option is nullified from here because this is the part of nervous system. Next, option D, the urinary bladder. Okay, what is the function of the bladder? We know the store the urine. Okay, so option C nullify here. Now the question is option A, B and D. Okay, so first option B, which is the urethra, the function of urethra is to help passing the urine. So this option is also correct. Incorrect. Option D, that is urinary bladder, which is the function of urinary bladder is to store the urine only. So this option is also incorrect. This is the correct option, option A, that is nephron. We know nephron is the structural and functional unit of the kidney. So it will help to filtrate the blood and collect the waste product, waste material from the blood and pass away from the body. Okay, so correct option is the nephron. Next, the human alimentary canal, the digestive juice secreted by gastric gland are option A bile, trypsin, pepsin, option B hydrochloric acid, pepsin, mucus, option C lipase, bile, mucus, option D salivary amylase, pepsin and bile.
Which one is the correct answer? चलिए देख लेते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वो एंजाइम्स कौन कौन सा है? चलिए, फर्स्ट द बाइल. Bile is not secreted by the gastric gland. Okay, so this option is incorrect. Okay, so next one, that is the hydrochloric acid, pepsin and mucus. Okay, this is the correct answer. Hydrochloric acid or HCl, pepsin and mucus, these are the substances or enzymes or materials that secreted from the gastric glands. Okay, chaliye next, which is because this gastric gland secretion actually secreted to the stomach. Okay, so in the stomach we know the HCl or hydrochloric acid is secreted. Okay, from this point of view you may choose this option. Next, the part of human eye which control the amount of light entering into it. Which one? Option A, iris. Option B, cornea. Option C, ciliary muscle. Option D, pupil. Which one? Which one? That is the option 1 is the correct, because iris are the muscle. Iris are the, because the iris is the opening. Okay, iris is the opening through which the light can pass through the lens, pass to the lens through your retina. Okay, so iris is the correct answer. Next, question number 15. Okay, consider the following food chain: grasshopper, grasshopper, frog, snake and eagle. Okay, if amount of energy available at the third tropic level is 50 kilojoule, the available energy at the producer level was, okay, यहाँ पे पूछा गया है कि जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, कौन सा वाला? इसमें थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, यहाँ पे जो एनर्जी मिला है वो 50 किलो जूल है. ओके, to the frog the energy passes 50 kilojoule. So what will be the energy available in the producer level, that is the grass? What will be the, we know the 10% law of Linderman, where it was proposed that the each tropic level get 10% of energy from the from its lower level. Like this is the producer, next first or primary consumer, next secondary consumer, next the tertiary consumer. Okay, primary, secondary and tertiary. If there have the x amount of energy, okay, the next level, that is the first consumer or primary consumer, will get the 10% of x. Okay, so it will be
0.1x. Okay, so 10% only, 10% energy will be passed on to the next tropic level. So if there is 50, the grasshopper will be 50 into 10, that is the 500 kilojoule, and the grass, that is 500 into 10, that is 5000 kilojoule. So option D is the correct answer. Okay, option D is the correct answer. चलिए next, the incorrect statement about ozone is it is a deadly poisonous gas. Okay, option B, it seals the surface of the earth from UV radiation from sun. It is used as a refrigerant and fire extinguisher. It is formed by combining oxygen molecules with free oxygen atom. Which one is the wrong? Okay, first option, that is it is a deadly poisonous gas. This is true. ओके, ये एक पॉइजनस गैस है, ये ट्रू है. इट सील्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन. ये सन का जो यूवी रेडिएशन होता है उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ये भी ठीक है. नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज refrigerant and fire extinguisher. No, this is wrong, because in refrigerant we use the CFC, chlorofluorocarbon, and in fire extinguisher we used the carbon dioxide. Okay, and it is formed by combining oxygen molecule with a free oxygen atom, of course O2 plus O, that is O3. So this is also correct. So the incorrect option is the option C. So the incorrect option होता है कि ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट. ओके, assertion and reason. Xylem tissue move water and minerals obtained from the soil by the root. Okay, assertion and reason. Xylem tissue is founded only in roots of the plant. Okay, assertion में लिखा है कि xylem tissue move water and minerals obtained from the soil by the roots. Okay, xylem tissue जो होता है वो सॉइल से जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब होता है सॉइल से रूट में, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, और रीजन में लिखा है xylem tissue is found only in roots of the plant. जो xylem tissue होता है वो सिर्फ और सिर्फ रूट में पाया जाता है. ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो करेक्ट नहीं है, ये वाला करेक्ट है. तो चलिए देखते हैं. Select the correct option. Okay, from the below. Okay, चलिए. तो पहला वाला जो ऑप्शन है, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. No, this is wrong, because assertion is true but reason is false. Next, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of the assertion. No, reason is not true. Assertion is true but reason is false. This is the right one. Option C is the correct answer. Okay, option C is the correct answer. क्या लिखा है? assertion true है मगर जो reason है उसका वो false है. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, अगेन assertion and reason. क्या लिखा है assertion में? फूड वेब इज द नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम. फूड वेब जो होता है वो एक नेटवर्क है जो कि एक इकोसिस्टम में पाया जाता है, जो बहुत सारा फूड चेन का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारा फूड चेन को ऑपरेट करता है. और उसका रीजन है कि रीजन में दिया हुआ है कि फूड वेब डिक्रीजेस
द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड वेव जो है जितना बड़ा होगा फूड वेव वो डिक्रीज करेगा इकोसिस्टम को। नो, ये वाला तो गलत है। So reason is the wrong, but the assertion is right. That is, food web is the network of several food chains. Okay, जो बहुत सारा फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाता है। कैसा? देखिए, यहाँ पे ग्रास है। ओके, ग्रास को इंसेक्ट से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, स्नेक से पीकॉक। Okay, this is a food chain. Again, this grass को consumed by deer, consumed by like tiger. Insect also consumed by birds. Okay, frog also consumed by birds. So बहुत सारा जो फूड चेन होता है वो मिल के बनाता है एक फूड वेव। एंड जितना फूड वेव बड़ा होगा, जितना स्ट्रांग होगा, इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है। सो द ऑप्शंस, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ assertion and reason are true. No, the reason is the false. Both assertion and reason are true, but the reason is not correct explanation of the assertion. No, this is also wrong. Assertion is true, but the reason is false. Yes, this is the correct option. That is option C. दोनों में ही assertion reason जो है, दोनों में ही assertion true है और जो reason है उसका दिया हुआ है वो false है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्या है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ इज ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी? ओके, वेरी गुड। हाउ ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी? हम लोगों का बॉडी में जो ब्रेन है वो कैसे प्रोटेक्टेड होता है? कैसे प्रोटेक्टेड होता है? चलिए, we know that is brain situated or located in a box which is called brain box. brain box brain box को और क्या बोलते हैं? cranium. ओके, cranium. ठीक है, ब्रेन बॉक्स और cranium. ठीक है, नेक्स्ट जो क्रेनियम का अंदर है वो एक 3 लेयर का कवरिंग है। ठीक है, 3 लेयर का एक कवरिंग दिखाई देता है। वो क्या है? मेनिंजेस। मेनिंजेस, दैट इज 3 लेयर्ड कवरिंग ऑफ ब्रेन। 3-layered covering of brain. Okay, so what are the 3 layer? We know from the outer to the inner, that is the dura mater. What are the 3 layers? First one, that is dura matter. Number 2, arachnoid matter. And number 3 is the pia matter. Okay, dura matter, arachnoid matter and pia matter. Okay, these are the 3 layers. And also between these 3 layers, like this is the arachnoid matter, this is the dura matter, this is the arachnoid matter and this is the pia matter. Between two membrane, there have some special fluid which is known as CSF, cerebrospinal fluid.
cerebrospinal fluid. Okay, so how brain is protected? First of all, brain is protected by a hard cell which is known as brain box or cranium. Okay, next, brain is covered by three-layered membrane which is known as meninges, and these meninges have three layers, that is dura mater, arachnoid matter and pia mater. And also between two layers there have a special fluid which is known as CSF or cerebrospinal fluid, which actually absorbs the mechanical shock. Okay, so that's how the brain protected in our body. In these ways the brain is protected in our body. ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? A doctor finds in one patient, one of his patients, that he is not maintaining a proper posture and balance of his body. State the reason of brain and also the part of the brain which is responsible for it. एक डॉक्टर उसके जो पेशेंट्स है उसमें से एक पेशेंट जो कि बॉडी बैलेंस और नॉट मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड पॉस्चर, तो पूछा है कि उसका ब्रेन का कौन से रीजन में जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो बॉडी बैलेंसिंग है, व्हेन वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, ओके, सो उसके लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि हम लोगों को बैलेंसिंग में हेल्प करता है? वो है सेरेबेलम. ओके, ब्रेन का पिछला वाला जो हिस्सा है वो सेरेबेलम होता है. वो हेल्प करता है एक्चुअली when you are running, you are walking, for to balance your body. and बहुत सारा सेंसरी रेस्पॉन्स में भी इनका रेस्पॉन्सिबल है. इन ये सेरिबेलम रेस्पॉन्सिबल है रेस्पॉन्स करने में, बहुत सारा सेंसरी मूवमेंट में. Okay, so this cerebellum located at the base of the brain and coordinate the muscle movement, posture, balance and processing the sensory inputs of the body to making the adjustment of the body, So which part of the brain? That is cerebellum, which actually helps when you are running, you are walking, or you are doing something to adjustment of your body. It will actually regulate the muscle movement and adjust your body to stable or static or in standing condition. Okay, next. Okay, protein control the expression of various characters. Proteins control the expression of various characters. Explain this statement by taking an example. Tallness as a characteristic of in plants. Okay, पूछा है कि प्रोटीन कंट्रोल करता है जो भी कैरेक्टर होता है उसका एक्सप्रेशन में. ठीक है, कैरेक्टर क्या है? जो भी हाइट, योर बॉडी कलर और आई कलर, ये सारे बॉडी कैरेक्टर होता है. और ट्रेट क्या होता है? दैट इज हाइट इज टॉल और शॉर्ट, दिस इज द ट्रेट. सो यहाँ पे बोला है कि प्रोटीन कंट्रोल करता है ये सब जो कैरेक्टर्स होता है उसका एक्सप्रेशन में. विद द टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट हेल्प द कैरेक्टर, वन कैरेक्टर दैट इज टॉलनेस ऑफ अ प्लांट. Okay, चलिए, we know that is tall plants are denoted as capital T and short plants are denoted as small t. So ये जो tall plants होता है उसके लिए
जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एज वी assume that is the capital T. This gene we know that is the gene located inside the DNA, and this DNA encode a specific part which can produce a gene by which process, that is DNA to DNA, that is known as replication, and DNA to mRNA, that is mRNA, which is known as transcription. And this transcription process produce mRNA will again go through the translation and produce a specific protein. So basically the DNA is the responsible to produce the protein. Suppose the capital T gene located here, okay, so it will produce the precursor molecule or the protein which is help to various metabolic activity or physiological activity. Like the proteins is the body building component of every organism's body first. Secondly, it is also the component of the enzymes, okay. So different types of amino acids also formed from the proteins. So protein is the basic unit, okay, necessary unit for the human beings or any other living organisms, especially for the animals. So the protein that is produced from the gene T, for the plants we know the growth hormone. The protein is also responsible for hormone production or hormone synthesis, that is hormone, enzymes, amino acids, okay. So these are the functions of proteins in living organisms, especially the animal's body. So these in case of plants, the the growth is regulated by plant hormone or phytohormone. We have already studied it. So the hormone or the phytohormone, which are the growth hormone we know, that is auxin and gibberellin. So these auxin and gibberellin, these growth hormones function or production will be regulated by the gene which is actually responsible for the height of the plant, which actually regulates the height of the plant. If the protein synthesis is become high, which is actually help to promote production the auxin and gibberellin, okay. So where the auxin and gibberellin production is high, we know that auxin promote the apical dominance, and that is the plant helps to grow apical region, and the gibberellin help in the stem elongation. So these two hormones are responsible for the growth of the plants. So the tallness of the plants is regulated by the gene T. If we assume that by the help the T gene is responsible for the plant height or regulate the plant's height, so it will promote the production of auxin and gibberellin, okay. चलिए, hope this is clear. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Explain the mechanism of inheritance used by sexually reproducing organism to ensure the stability of DNA of a species. Explain the mechanism of inheritance by sexually reproducing organisms to ensure the stability of DNA of the species. जो आपका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उन लोगों का जो डीएनए और क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो सेम रहता है हर एक ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन द डीएनए और द क्रोमोसोम नंबर बीइंग सेम. So how this is possible? Okay, as we know that sexually reproducing organism produces gametes.
and we know that gametes are haploid. Gametes are haploid. Haploid mean the chromosome number being half. If the autosome of the organism, that is the autosome, what is autosome? The chromosomes found in the body cell. Okay, body cell, that is autosome. ऑटोजोम में जो सेल्स होता है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है अगर वो 2n है तो गैमेट सेल्स जो होता है दैट इज इन केस ऑफ मेल दैट इज शुक्राणु और द स्पर्म एंड इन केस ऑफ फीमेल दिस इज द ओवम. ओके, और एग, उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है n. By the fusion of these gametes, that is n and n, that is male and this is the female. फ्यूजन में जो प्रोड्यूस होता है, जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, उसमें होता है 2n. So that's how by the process of meiosis, that's how by the process of meiosis, where the chromosome number being halved in the meiosis 1 and in meiosis 2, it is actually the mitosis, that is the meiosis 2. Meiosis 2. So by this process, by the process of meiosis, the sexually reproducing organisms maintain their chromosome number. Okay, maintain their chromosome number and being same DNA or number of DNA or DNA stability or the chromosome number stability maintain होता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ द वेसल्स दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, deoxygenated blood to the human heart. Okay, very good. फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड वेसल से, कौन सा ब्लड वेसल से ह्यूमन की बॉडी में, ह्यूमन के हार्ट में आता है? एनीवन? चलिए, we know that the blood, the oxygenated blood generally carried by whom? By veins, sorry, by arteries. But the oxygenated blood carried from the lungs to the heart by pulmonary vein. Pulmonary vein. Okay, next the deoxygenated blood is carried by pulmonary artery. Okay, generally artery carries the oxygenated blood, but this is the exception, that is the pulmonary artery वो क्या करता है, जो deoxygenated blood होता है, that is CO2 rich blood कैरी कर ले जाता है from the human heart to the human lungs. Okay, the next also mention that chamber of the heart which receives the deoxygenated blood. Okay, and state how deoxygenated blood from this chamber sent to the lungs for oxygenation. Okay, very interesting. चलिए, जो ऑक्सीजन पूछा है कि कौन सा चेंबर में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन सा चेंबर में आता है, कौन सा चेंबर में आता है, ऑफ कोर्स, और किसके थ्रू आता है?
किसके थ्रू आता है, कौन सा चेंबर में आता है, और स्टेट हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चेंबर सेंड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ओके, चलिए, we know that is the right side of the heart, right side of the heart, that is the side which this side, okay, so this side of the heart carries the right side of the heart carries CO2 rich blood. Okay, so which chamber also mention the name, mention that chamber of the heart which receives oxygenated blood. Of course, chamber is the right atrium, right atrium or right auricle. From whom? From the vena cava. Okay, from superior inferior vena cava. And state how oxygenated blood from this chamber is sent to the lungs for oxygenation. ये जो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे हार्ट से लंग्स तक पहुंचता है ऑक्सीजनेशन के लिए. Okay, so first of all, that is collected by right atrium. If this is the diagram of a heart, that is okay, so this is the right atrium and this is the right ventricle. From the right atrium, blood moves to the right ventricle, and from the right ventricle, this deoxygenated blood or CO2 rich blood get reached to the lungs through the pulmonary artery. Where here the pulmonary artery which actually carry the, this is the pulmonary artery which actually carry the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. Okay. चलिए, next. The gene combination in of purple flowered pea plants is denoted as capital W, and that of white flower pea plants as small w. When these two plants are crossed, F1 generation is obtained. Number one, list of observations made by Mendel in F1 generation plants. Give the percentage of white flower plants, and the ratio of the gene combination capital W, small w, and small w in F2 generation. चलिए, क्या पूछा है यहाँ पे कि एक दो जेनेटिक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है यहाँ पे. एक है कि पर्पल वाला फूल पी प्लांट का और दूसरा सफेद वाला फूल. ठीक है, सो क्रॉस बिटवीन देम, जो पर्पल वाला फ्लावर प्लांट पी प्लांट के साथ सफेद फूल वाला पी प्लांट जो है उसका क्रॉस किया हुआ है. और यहाँ पे पूछा है था लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस मेड बाय ग्रेगर जोहान मेंडल इन F1 जनरेशन. मेंडल ने F1 जनरेशन में क्या देखा? चलिए, ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. तो चलिए, फर्स्ट कैपिटल W और यहाँ पे स्मॉल w. तो ये है P1 जनरेशन. तो यहां से जो भी गैमेट होगा, that is gametes,
वो होगा कैपिटल W, और यहाँ भी होगा स्मॉल w। सो इन F1 जनरेशन वी विल फाउंड, हम लोगों को क्या मिलेगा, और मेंडल को क्या मिला था, कैपिटल W स्मॉल w, ठीक है। हेटेरोजाइगस पी प्लांट, उसमें फ्लावर का कलर क्या मिला, पर्पल, ठीक है। पर्पल वाला सारे जो भी जितने भी फ्लावर मिले, वो फ्लावर्स प्लांट्स मिले, वो सब पर्पल वाला मिला। सो लिस्ट टू ऑब्जर्वेशंस बाय ग्रेगर जोहान मेंडल इन F1 generation, that is all the plants that is your in F1 generation are produced in purple flower trait, okay। चलिए, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो है, all plants in F1 generation are purple flower, एंड दूसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन है, दैट इज द व्हाइट फ्लावर्स प्लांट्स do not or unable to express its character, okay, its character। सो ये दोनों ऑब्जर्वेशन मेंडल ने नोटिस किया। क्या है कि F1 जनरेशन में जितने सारे प्लांट मिला, वो सारे पर्पल फ्लावर्स मिला। और दूसरा ऑब्जर्वेशन जो है, जो सफेद वाला यहाँ पे क्रॉस हुआ था पर्पल वाला फ्लावर से सफेद वाला फ्लावर प्लांट के अंदर, वो सफेद वाला जितने भी फूल सफेद फूल वाला जो भी प्लांट्स था, उसका कैरेक्टर F1 जनरेशन में कहीं भी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन गिव द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स एंड the ratio of the gene combinations capital W, small w and small w in F2 generation। चलिए, ये है F1 generation। Now come to the F2 generation। So in P2 generation we will cross between the offsprings, that is in F1 generation। So capital W small w cross with capital W small w। So here is the Punnett square और चेकरबोर्ड, दैट इज कौन सा गैमेट मिलेगा यहाँ पे, कैपिटल W एक और एक स्मॉल w, एक स्मॉल w, यहाँ पे भी एक कैपिटल W एक स्मॉल w। सो यहाँ पे कैपिटल W, यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ पे स्मॉल w स्मॉल w, ओके। सो यहाँ पे परसेंटेज पूछा है कि परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, तो चलिए इसका फिनोटाइप देख लेते हैं। जो कैपिटल W वो क्या होगा, पर्पल। यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w, ये भी पर्पल, यहाँ पे भी पर्पल, और ये जो स्मॉल w है, ये वाला होगा व्हाइट। सो द परसेंटेज ऑफ योर व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट, दैट इज 1/4 into 100,
that is 25% white flower plant. Okay, now उसके बाद पूछा है कि the ratio of gene combination, that is capital W, capital W, capital W, small w and small w, small w in F2 generation. तो रेशियो क्या होगा, चलिए यहाँ पे है एक कैपिटल W, कैपिटल W स्मॉल w है 2 और स्मॉल w है 1. So the ratio will be 1:2:1. Okay, 1:2:1. Now उसके बाद पूछा है कि write one difference between dominant and recessive trait. Very easy. This is very easy if we understand. और ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये अगर आप लोगों का समझ में आ गया तो इसका जो डिफरेंस है डोमिनेंट और रिसेसिव का वो सही तरीके से कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. सो यहाँ पे पूछा है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव. So in dominant trait, of course, this is trait. Okay. So we know that dominant trait can express its character when it is heterozygous. Okay. Like here, capital W and small w. What is the phenotype? That is purple. But recessive traits only express its character in homozygous condition, that is white. So the basic difference, that is dominant traits can express its character in heterozygous condition, but rather recessive traits can express its characters only in homozygous condition. ठीक है, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होता है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बोथ कंडीशन में उसका जो कैरेक्टर है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में उसका जो कैरेक्टर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेकिन जो आपका रिसेसिव ट्रेट है वो केवल जो होमोजाइगस कंडीशन में होगा. जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी उसका जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. So this is the difference between the dominant trait and recessive trait. One of our student comments that GNA do sir. I cannot understand what you are asking. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्यूबर्टी लिस्ट ऑफ
two changes seen in boys at the time of puberty. Puberty क्या होता है? What is puberty? Puberty क्या होता है? ठीक है? और list two changes seen in boys in the time of puberty. So what is puberty? Puberty क्या होता है? एक चाइल्ड से एक चाइल्ड का जो बॉडी में हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस होता है जिससे वो सेक्सुअली मैच्योर्ड होता है. ठीक है? इस प्रोसेस को और इस स्टेज को बोलते हैं प्यूबर्टी. द प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन द चाइल्ड और अ चिल्ड्रन get matured, sexually matured by changing its their physical and hormonal condition. Okay, so this is a stage when a child get matured sexually. Okay, so next question, that is list any two changes seen in boys in the time of puberty. So puberty में एक लड़का में क्या changes दिखता है? क्या changes दिखता है? Number one, that is their voice more deeper. Okay, their voice get more deeper. उन लोगों का जो voice होता है आफ्टर प्यूबर्टी, लड़कों का क्या होता है? जो voice होता है वो गंभीर हो जाता है. ठीक है? due to enlargement of larynx. Okay, due to enlargement of larynx. Okay, first. Second, growing body and facial hair. That is उसका जो body and facial hair, that is facial hair mean the beards and mustaches growing. This is the changes, this is the your characters of the puberty, or this is the secondary characters, secondary sexual characters in puberty, which is seen, which is observed in boys. Okay, जो लड़का में दिखता है. ठीक है? So these are the two main changes which is observed in boys in the time of puberty. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि why are testes in human males located outside the abdominal cavity in scrotum? Okay, why are the testes in human males located outside the abdominal cavity of the scrotum? Human male में जो testes होता है वो क्यों बॉडी, दैट इज स्क्रोटम में क्या होता है? टेस्टिस. और टेस्टिस का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, सो इसका जो फंक्शन वो क्या है? प्रोडक्शन और द स्पर्म प्रोडक्शन और शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है. सो जो टेस्टिस का फंक्शन होता है दैट इज स्पर्म प्रोडक्शन.
सो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है स्पर्म प्रोडक्शन का उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर लगता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ओके, टू सर्वाइव द स्पर्म एज वेल एज टू प्रोड्यूस द स्पर्म। ओके, बॉडी का टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर में स्पर्म सर्वाइव करते हैं और जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो भी बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में कम टेम्परेचर में होता है। सो इसलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ओके, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी वो लोकेटेड होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 टेक्निक्स ऑफ contraception used by human, which one of these is not meant for male? Okay, तो पूछा है कि 3 कंट्रासेप्शन मेथड जो लोगों में और ह्यूमन में यूज होता है कंट्रासेप्शन मेथड, और इसमें से कौन सा आपका मेल में यूज नहीं होता। ओके, इनमें से कौन सा मेल में यूज नहीं होता। चलिए वो कंट्रासेप्शन मेथड्स क्या है देख लेते हैं। कंट्रासेप्शन मेथड क्या है? टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। सो दिस इज यूज्ड बाय द barrier method or any chemical method or any surgical method. Okay, so first one, that is barrier method. Barrier method. What is the example? Uses of condoms, okay, or cervical caps. Cervical caps. This is the one, that is the barrier method. Okay, hi Shubham. This is the cervical barrier method, number 1. Number 2, that is the chemical method, that is example of chemical method, that is hormonal method. Hormonal or chemical method. Chemical method. So what will be the examples? What will be the examples? Of course, the contraception pills. Contraception pills or hormonal injections. Okay, and the last method or the permanent method for the contraception, that is the surgical method. Surgical method, that is vasectomy and tubectomy. Vasectomy and tubectomy. Okay, vasectomy and tubectomy. Okay, so these are the 3 types of methods that is used for the contraception in humans. What are they? First one is the barrier method. What is the example? That is use of condoms or the cervical caps. Next one is the hormonal or chemical method, where use the contraception pills, uses contraception pills, hormonal injections, and surgical method is the vasectomy or tubectomy. Okay, शुभम पूछा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या है?
ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब ही है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी द मेथड्स आर अप्लाइड टू अनफर्टिलाइज द एग। ओके, जिससे जो एग होता है फीमेल का वो फर्टिलाइज्ड नहीं होता। ठीक है, सो दिस मेथड इज नोन एज कंट्रासेप्शन। ओके, शुभम और भी पूछा है कि टेस्टिस में कौन सा टिश्यू होता है। टेस्टिस में बहुत सारे टिश्यू होता है। सेल्स अगर पूछे तो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडीज जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, उसके साथ जो सर्टोली सेल्स होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एज वेल एज द लेडीज सेल आल्सो help in the production of sperm, and the Sertoli cells also help in production of sperms as well as the nourishment of the sperm. Okay, जो sperm प्रोड्यूस होता है उसका जो पोषण में और उत्पादन में ये जो सेल्स होता है वो हेल्प करता है। गिफ्ट सहदेव, हाय सहदेव, हाय सानिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पूछा है कि which of these is not meant for male। ये जो सारे लिखा है यहाँ पे जो मेथड्स, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स, इनमें से कौन सा मेल में यूज नहीं होता, कौन सा मेल में यूज नहीं होता। Here have two, that is the cervical method. Okay, this is actually used for the female only, and the tubectomy. Okay, the tubectomy where the fallopian tube is cutted. Okay, so these are the two methods that is not used in males. Okay, Amritans Choube, hi Amritans। आप लोग सभी लोग क्या सीबीएसई बोर्ड से है? यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माय क्लास, ऑल ऑफ देम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ओके, तन्मय ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লাস কবে হবে? ওকে, তন্ময় ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্লাস হবে, তুমি টেলিগ্রাম চ্যানেল যেটা আছে you may join there, we will inform there when the class is being scheduled. Okay, we will inform in this channel. তুমি আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল আছে তন্ময়, সেখানে জয়েন করে যাও, সেখানে আমাদের রুটিন দিয়ে দেওয়া হবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের কবে ক্লাস হবে, এবং all the students from the CBSE board, you also may join in the same telegram channel to know the routine of the CBSE classes, as we discussed earlier, that is per day, in every day you will get 3 p.m. to 4 p.m. one live class for the test paper or the 10 years paper solution, 10 years exam paper solution. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी फंक्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे 4 फंक्शंस है, जो फंक्शंस दिया हुआ है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ होता है, कौन सा पार्ट में ये होता है? चलिए, so the first one, that is production of eggs.
आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा ये वाला क्वेश्चन? आप लोगों में से कोई ट्राई करना चाहेगा? प्रोडक्शन ऑफ एग, जो डिंबाणु होता है उसका प्रोडक्शन कहां होता है? प्रोडक्शन ऑफ एग्स, where the eggs are produced in female reproductive system, where the eggs are produced in female reproductive system. यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है, शुभम, सनिया, सहदेव, अमृतांश, anyone wants to try? ओके चलिए, तो जो प्रोडक्शन ऑफ एग्स होता है वो कहां पे होता है? ओके, ऑफ कोर्स ओवरीज, ओवरीज में, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ऑफ कोर्स फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ओके, और ऑल्सो दिस इज नोन एज ओविडक्ट। नेक्स्ट, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहां होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट प्रोड्यूस होता है वो कहां इम्प्लांट होता है? कहां इम्प्लांट होता है? ऑफ कोर्स यूटरस, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म कहां से एंटर करते हैं? स्पर्म्स कहां से एंटर करते हैं? चलिए, स्पर्म कहां से एंटर करते हैं? Yes, of course, from the cervix or cervical passage. Okay, or from cervical passage. Okay, चलिए, so that's all for the today's class. We have already complete the page number, the question set from the Outside Delhi 2025, which is solved by me, only biology part, and madam, that is your JB ma'am, completed the physical science, that is physics and chemistry part. So hope you like the video and you like the class. So if you like to get more such informative and educational classes, please do subscribe our YouTube channel, Edwins. Thank you.